As we have seen yesterday, there are different types of construction. The first one was aggregative, और उसमें भी first part, that is simple aggregative index number. Simple aggregative index number, as the name suggests, is very simple. The formula हम लोग पहले सारे प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले से ही करते हैं और फिर उसको क्वांटिटी इंडेक्स में करेंगे. So the formula of price index number by simple aggregative is CP, capital P denotes price index number. So it will be summation P1 upon summation P0 into 100. तो आपको बेस और करंट ईयर के प्राइसेस दिए होंगे, आप उनके एडिशन करोगे, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी योर इंडेक्स नंबर. Say suppose they have given us 3 commodities, their base year prices is current year prices. So we'll total this. This is 30. We will total this. This is 26. Now my index number will be, now see, P summation P1 is 26. So 26 upon 30 multiplied by 100. So that is 86.67. It means as compared to base year, because your index number is less than 100, so as compared to base year, in current year the prices has decreased by 13.33%. अगर यही उल्टा होता तो फिर increase हो जाता. So this was formula for price index. Now let us talk about what about quantity index. Quantity index, same formula, just P is replaced by Q. So it is Q1 upon summation Q0 into 100. This is quantity index number. Value index number is price index number into quantity index number. There is no separate formula. Now, before we go to the further cases, that is weighted aggregative index number, जिसके बहुत सारे formulas हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, तो उस पे जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि टर्मिनोलॉजीज क्या है इंडेक्स नंबर में. इंडेक्स नंबर की कुछ टर्मिनोलॉजीज है. अगर Y0 ये बेस ईयर होता है या बेस पीरियड होता है, if Y0 is a base period, then P0 is price of base period. Q0 is quantity of base period. Then if Y1 is current year or current period, then P1 is price of current year and Q0 is price of, sorry, quantity of base year. Any index number is generally denoted like this. Any index number, it means index number of year 1 with the base year 0. This means index number of Y1 with base Y0. If I write capital P01, then this is price of price index number
Q, capital Q01. This is quantity index number. And this is value index number. प्राइस और क्वांटिटी के बहुत सारे फॉर्मूलेज है. मैं जैसे ही पहले प्राइस बताऊंगी आपको क्वांटिटी के भी बताऊंगी. सिर्फ पी और क्यू का सब्स्टिट्यूशन है, बाकी कुछ नहीं. वैल्यू इंडेक्स नंबर का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी. So these are the basic terminologies that we are going to use in index numbers. Weighted aggregative index number formula. इसमें बहुत सारे formulas है, and we'll write down all the formulas and then we'll do the sums. So the first one is when the weights W is given. So your index number formula is summation P1W upon summation P0W multiplied by 100. Then the next one is very famous, given by Lasprey's. इसको Lasprey's index number कहा जाता है. Here the weights are not given. Base year quantity is taken as weight. And the formula is summation P1Q0 summation P0Q0 multiplied by 100. Third one is Pache's index number. These are all the names of the people who have developed this index number and studied it. Mostly, most of them are economists. Pache's index number. Here, current year quantity is weight. Current year quantity is weight. So the index number is summation P1Q1 upon summation P0Q1 multiplied by 100. This Pache's index number. Next is Fisher's index number. ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है. It is geometric mean of Lasprey's and Pache's. So Fisher index number is given as under root Lasprey's into Pache's. L means Lasprey's. This is also given as Lasprey's index number. This is also termed as Pache's, denoted by PL. This is denoted by F. Or in the form of formula, this can also be written as summation P1Q0 summation P0Q0 into summation P1Q1 summation P0Q1 outside the under root sign multiplied by 100. Lasprey's is also called as an ideal measure of or an ideal index number, because we have it further. It satisfies most of the criteria of ideal measure. It satisfies all the rules, and therefore Fisher is also called as ideal measure of index number. So this was a 4 index number: Lasprey's, Pache's, Fisher. Then next is
Dorbish-Boles index number. Bowles, whatever you want. In the Dorbish-Boles index number, it is arithmetic mean. It is arithmetic mean of Laspeyres method and Paasche method. So Dorbish-Boles is denoted like this. And the index number is L plus P upon 2. That is summation P1 Q0, summation P0 Q0, plus summation P1 Q1, summation P0 Q1, whole thing upon 2 multiplied by 100. This is Dorbish-Boles index number. Then the next important index number is मार्शल एजवर्थ. वैसे तो बहुत सारे इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वन ही हम लोग स्टडी करेंगे. हो सकता है आप खुद भी अपना एक नया फॉर्मूला डेवलप करो, लेकिन हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक फॉर्मूले 6 जो है. मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर, वेट इज sum of both year quantities. So Marshall Edgeworth index number is given as summation P1 into Q0 plus Q1 upon summation P0 into Q0 plus Q1 whole thing multiplied by 100. अब base year के quantities को और current year के add करोगे, that will be your weight. This can also be written as summation P1 Q0 plus summation P1 Q1 whole thing upon summation P0 Q0 plus summation P0 Q1 whole thing multiplied by 100. So this is Dorbish-Boles and Marshall Edgeworth index number. जो वेट लिया जाता है, whatever is taken as weight, that defines the new formula. जैसे Laspeyres में बेस ईयर क्वांटिटी वेट था तो वो Laspeyres मेथड हो गया. जब वेट करंट ईयर क्वांटिटी होता है तो वो Paasche मेथड हो जाता है, and so on. Now remaining two. Walsh method, Walsh index number. Walsh index number is given as, इसको कोई डिनोशन नहीं है, it is summation P1 under root Q0 Q1, or to make it very clear, I will say summation P1 Q upon summation P0 Q whole thing multiplied by 100. Here Q is geometric mean of base year and current year quantities. Here weight is geometric mean of both year quantities. तो Q की वैल्यू Q0 into Q1 whole thing का अंडर रूट, और उसको वेट लेके हम लोग इंडेक्स नंबर निकालेंगे. And the last index number that we will study is Kelly's index number. Here the formula is summation P1Q upon summation P0Q into 100, where Q is arithmetic mean of base and current year quantity.
Q or weight is arithmetic mean of both year quantities. So these are all the formulas. जैसे प्राइस का है वैसे ही क्वांटिटी का होगा, लेकिन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में लास्ट प्राइस पाशेस ही आता है, बाकी हम लोग ये वॉल्स वो सिर्फ प्राइस के लिए निकालते हैं. So we'll learn about quantity index number when we'll finish price index number. हम लोग इसके सम्स करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वांटिटी पे जाएंगे. So these are all the formulas that we have to go through. और ये लर्न होने चाहिए, इनकी ये जो कीवर्ड्स है ये भी आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि इस पे एमसीक्यूज आएंगे हमेशा. मैम स्टार्टिंग से फॉर्मूले देखो ना, स्क्रीनशॉट लेने. वही कर रही हूँ. यस मैम. This is our formula. This is our sum. Calculate last price, Pasha's, Marshall, Edgeworth, Dorbish, Boley, Fisher, and Kelly index number using the same. We'll first find out last price index number. हर बार आप sum करो तो आप तुरंत ही formula लिख लिया करो. Whenever you write the formulas for every sum, एक तो गलत होने के chances कम हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने formula ऊपर लिखा होता है. And next important thing is बार बार फॉर्मूला लिखने से वैसे ही वो लर्न हो जाएगा. तो फॉर्मूला इज समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो मुझे क्या चाहिए? P1 इंटू Q0. सो आई विल फाइंड आउट P1 इंटू Q0. 22 इंटू 15, 27 इंटू 5, 7 इंटू 10. नाउ यू नो, टेक योर कैलकुलेटर्स and you can do it directly. 15 into 22 and then press M plus. ये M plus से अगर करोगे तो आपको directly addition ही मिल जाती है. So it is 330. तो वो कैल्सी पे ही दिखेगा. M plus किया तो वो मेमोरी में ऐड हो जाता है. Then do 5 into 27. Then again M plus. 130. 135. Then 10 into 7 M plus, that is 70. 70. So 330 plus 70 is 400. 500, this will become 535. Then find out P0 Q0. P0 Q0 will be 15 into 15, 225. ये लिख लिख के करने की जरूरत नहीं, आप कैल्सी पे M plus से करोगे तो आपको डायरेक्टली ये टोटल और ये टोटल मिल जाएगी. कैसे करना है? 15 into 15 M plus. Then 20 into 5 M plus. 4 into 10 M plus. 40. आपको डायरेक्टली, आप अभी M plus करते हैं ना, तो एंड में क्या करना है? ये सी तुमच्या कॅल्सी वरती MRC चं एक बटन असेल. कोई भी कैलकुलेशन शुरू करने से पहले MRC को एक बार दबा दो तो मेमोरी क्लियर हो जाती है. Now I have to directly find out total of P1 Q0. So you will see 15 into 22 M plus, 5 into 27 M plus, 10 into 7 M plus. इतना होने के बाद MRC का बटन दबाओ. देखो ये टोटल डायरेक्टली आ गई है आपके पास. Similarly here 15 into 15 M plus 20, लेकिन ये MRC आ गई
इसको clear करो, then start doing the next one. 15 into 15 m plus, 20 into 5 m plus, 4 into 10 m plus. फिर MRC का बटन दबाओ, आपके पास 365 आ जाएगा. Now you will put it here. This is calculator shortcut because we have MCQ paper pattern. तो आपको ये सब लिख के करने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम चला जाता है. You can directly do it on calcs. It is 535 upon 365 multiplied by 100. Your answer is 146.57. Parshas index number, it is denoted by capital P. Capital P for Parshas is different and for price is different. लेकिन दोनों का denotion तो capital P है. Formula है summation P1 Q1 because Parshas take current year quantities as base. Summation P0 Q1 into 100. तो हमको ये निकालना पड़ेगा P1 Q1 P0 Q1 निकालना पड़ेगा. Again, with the help of calc, you can directly take m plus. So 22 into 12 m plus. Then 27 into 4. Then P0 Q1. P0 Q1. See, after writing this, ये जब आप m plus करते हैं, उसके बाद MRC का बटन दबाओ, you will get the total. So 22 into 12 m plus, 27 into 4 m plus, 7 into 5 m plus, MRC का बटन दबाओ, आपको total मिल जाएगा. Total will be 9 plus 8, 17. This is and then P0 Q1. ये भी आप m plus से करोगे तो 15 into 12. It is 180. This is 100. Sorry. 15 into 12 is 180. 20 into 4 is 80. 4 into 5 is 20. This will become 280. अभी ये जल्दी से आ गया इसलिए मैंने कर लिया. आप इसको भी with calc कर सकते हैं. 15 into 12 m plus, 20 into 4 m plus, 4 into 5 m plus, MRC, you will get your total. So this will be P1 Q1, that is 407 upon 280 multiplied by 100. Your answer is 145.35.